Hello friends, in this video I will be talking about the ionization enthalpy or the ionization energy which is there in the D and F block elements of the CBSE syllabus. तो ये टॉपिक जो है वो टेक्स्ट बुक में अच्छी तरीके से नहीं समझाया गया है और स्टूडेंट्स को इसमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है। सबसे पहले मैंने ये एक टेबल यहाँ पे दिखाया है which is about the electronic configurations and some properties of the first series of transition elements, जिसमें हम फोकस कर रहे हैं इस समय हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो कि यहाँ पे दी हुई है इस पे हम फोकस कर रहे हैं. So we have to look at the first ionization enthalpy which you are seeing over here, the first ionization enthalpy. So if you consider that as we are moving from scandium to zinc, what is happening to the first ionization energy? You can see that 631, 656, 650 ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये 906 तक पहुंच जाती है. मतलब there is an increase in the first ionization energy if you go from scandium to zinc in the first transition series. तो अब अगर हम देखें कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, ये तो आपको पता ही है. इट रेफर्स टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस एटम एंड इट्स यूनिट इज इन किलो जूल्स पर मोल. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये 631 से 906 तक गई, मतलब देयर इज एन इंक्रीज. सो व्हाट इज द रीजन फॉर द इंक्रीज? सो रीजन फॉर द इंक्रीज इज ऑब्वियसली यू नो दैट देयर इज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज. अगर हम स्कैंडियम से जिंक तक जाएं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन में, तो एनर्जी निकालने के लिए ज़्यादा लग रही है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है. लेकिन हमको ये देखना है कि इफ़ आई कंपेयर इट विद द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स दिए हैं सोडियम से आर्गॉन तक, तब आप देखो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 494 से शुरू होकर 1520, मतलब देयर इज अ वेरी बिग इंक्रीज इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जब हम डी ब्लॉक की बात करते हैं देन वी आर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डी सबशेल, राइट. तो डी सबशेल और इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहे हैं वो डी सबशेल में ऐड हो रहे हैं, जिससे कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ रहा है. जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स है वो डिक्रीज हो रहा है. इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वो थोड़ी ही बढ़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती. जबकि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर हम बात करें तो देखो कितनी ज़्यादा बढ़ रही है. तो ये रीज़न आपको समझ में आ गया होगा. अब अगर हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज की बात करें, यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो ये जैसा आपको पता है कि द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकेंड विच इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट. तो स्कैंडियम में अगर हम देखें तो देखिए आपको ये पता चल रहा है कि कैसे ये एनर्जी जो है ये फर्स्ट से थर्ड तक बढ़ रही है. लेकिन वही अगर हम बात करें नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तो आप देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है. ये थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है, 7733. तो इसका क्या रीज़न है? इसका ये रीज़न है कि यहाँ पे वही बात है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें से जब हम डी इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं तो उनकी एनर्जी में उतना डिफरेंस नहीं होता जो कि हम डी इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं. सो अमंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स द इंक्रीज इन सक्सेसिव एनर्जी is not so much great, the difference is not so much great. Therefore the successive ionization energies are greater, but they are not as great as if you compare to non-transition elements. So now what are the factors on which the ionization energy depends? देखिए न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट, ये तो आपको मालूम ही है. लेकिन एक बात हुई है एक्सचेंज एनर्जी की टेक्स्ट बुक में, और ये एक्सचेंज एनर्जी को ठीक से समझाया नहीं है. तो एक्सचेंज एनर्जी का क्या मतलब है? देखिए जब हम नाइट्रोजन को लिखें तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो ऐसा दिखा सकते हैं कि हम जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर कर सकते हैं. लेकिन आपको मालूम है कि ये गलत है, क्योंकि हंस रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे होने चाहिए. तो जब हम इसको ऐसे रखते हैं, मतलब सिंगल सिंगल रखते हैं, तो इसको बोला जाता है लोअर एक्सचेंज एनर्जी. और जबकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाते हैं तो इसको बोला जाता है हायर एक्सचेंज एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे रिपल्शन होता है.
तो एनर्जी बढ़ जाती है. एंड एज यू नो दैट व्हेन देयर इज अ लोअर exchange energy, then the structure is more stable. So therefore, because it is lower exchange energy, therefore it is more stable, and therefore this is the correct configuration. So now if you consider the second ionization energy of chromium and manganese, तो क्रोमियम में हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में Cr प्लस से Cr टू प्लस में जा रहे हैं, मतलब हम 3d5 से 3d4 में जा रहे हैं. बट 3d5 जो है इट इज एक्स्ट्रा स्टेबल बिकॉज इट इज हाफ फिल्ड, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा. जबकि मैंगनीज में अब अगर हम Mn प्लस से Mn2 प्लस में जाएंगे तो हम ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो हम एक मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में चले जाएंगे. देयरफॉर टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मैंगनीज विल बी इजियर. So therefore you can say that the second ionization energy of manganese is lower than the second ionization energy of chromium. Now if you look at the third ionization energy, तो यहाँ पे आप देखिए हमें 2 प्लस से 3 प्लस में जाना है, तो यहाँ पे हम D5 से D4 में जा रहे हैं, तो D5 is more stable, it has got lower exchange energy, जबकि यहाँ पे हम D4 में जा रहे हैं which is less stable, therefore we will require more एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन. लेकिन जब हम Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में जा रहे हैं तो हम लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे एनर्जी कम रिक्वायर्ड थी. दैट मीन्स द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Fe will be less in comparison to the third ionization energy of manganese, or you can say that the third ionization energy of manganese will be lower than the sorry, because this is more stable, so this will be easier, because this will be easier, but this will be more difficult. So the third ionization energy of manganese is higher than that of Fe, right? Then sometimes we talk about that why is the second ionization energy of copper very high, because once again you see in copper from Cu plus 1 we are going to Cu plus 2, so from 3d10 we are going to 3d9. That means from more stable we are going to less stable, therefore we will require a large amount of energy to remove this electron, and therefore the second ionization of copper will be very high. In the same way, the second ionization energy of chromium will also be very high, because we are going from a more stable to a less stable structure. And then what about the second ionization energy for zinc? It will be very low. देखिए यहाँ पे कम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में जा रहे हैं, तो हम 4s1 निकाल रहे हैं और हमें एक और एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, तो हम लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में जा रहे हैं, तो वी विल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड देयरफॉर द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर जिंक will be quite low, because we are going from less stable to more stable state. But if you talk about the third ionization energy for zinc, that means you have to remove the electron from the Zn plus 2 state. Now that will be very difficult, because this is a highly stable structure and having a very low exchange energy. Low exchange energy is always more stable, and therefore this process will be very difficult. That's why zinc will not lose 3 electrons, and zinc will not show a plus 3 oxidation state. So I think you have understood the main concepts behind what we have to understand in the ionization enthalpy of ionization energy, and the trends that are visible in the D block elements, particularly the first series from scandium to zinc. And lastly, that why do the transition elements show the variable oxidation states and the various because and they differ by single units. Whereas if you compare, what is the reason? The reason is that there is not much difference between the energy level of the Ns and the N-1d electrons. Their successive ionization energies are not very different, and therefore not only the N-1d but the Ns electrons can also participate in bonding, and therefore it will give rise to various different oxidation states. Thank you very much. Hope you understood, and if you have understood and enjoyed this lecture, please like and comment. Thank you very much.